जी बख्तावर मेरा ख्याल है हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द सेशन बिकॉज़ और भी आ रहे हैं बच्चे. तो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट इन द All मीनवाइल right. दे हाँ जी. एंड सिंस दिस इज़ आल्सो रिकॉर्डेड सेशन तो अगर They can कोई always see it. I get it now. ठीक है. ठीक है. I think let's just kickstart the conversation on this. First of all, thank you so much, Madam Fiker, for inviting me for this talk. And many thanks to all the students who have joined in today and who will be joining us during the course of this discussion. The topic for today's talk, I wish we could have done this in person, is understanding Pakistan's constitution as a function of external costs and decision costs. So just very quickly about myself, I'm a senior associate at ABS & Co. With a few years of experience as a litigator in the High Court. But I've always had an interest in constitutional law, in constitutional theory, and in constitutional economics. So whenever I do find the time, I try to read up on that subject. And most of what we will be discussing in today's class relates to my area of interest. To be fair, and I am not an expert in constitutional law at all. I do not consider myself as an expert. I'm more of a practitioner, but you can see that as someone who's interested in law, someone who's interested in constitutional law and in constitutional theory, I try at least to continue engaging with literature that is emerging in this particular field. So very quickly, the purpose of this talk will not be to tell you something about the constitution or to talk about the Pakistani constitution as to whether it is a good constitution, whether it's a bad constitution, what are the things that can be improved. My purpose of giving this lecture or having this discussion in the first place is to provide you with a different way to think about the Constitution, to provide an analytical framework from which you can approach the Pakistani Constitution, or for that matter, any constitution. And so we will be looking at the Constitution from the standpoint of a particular discipline called constitutional economics. And so the lecture or this discussion is divided into two parts. The first part focuses on the basic economics of this discipline. And then in part two, I will very quickly move on to the application of that theory or some principles that have emerged from that discipline. And we will try and apply that in the Pakistani context to try and see how well or how does the constitution try and strike a balance between competing ideals that form and underscore this discipline. Um, are there any questions at the beginning before I move forward? Also, can you all see me? And can you all confirm that you can hear me properly before I move forward, G? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, wonderful. So let's start off with the theory, very basics, right? So I really like to break down things um, into their constituent elements, or just to simplify things as much as possible. So let's just start off with this basic hypothetical, right? And I want all of you to read this. And the hypothetical is that you and your best friend have to decide what restaurant to go to for dinner tonight, and assume that there are only two options that you can choose from. And this is a dilemma that we face repeatedly, I think every other week, if not every other month. And so you have to choose, they're just the two of you, and you have to choose between, let's say, KFC and McDonald's. And let's assume that you have a strong preference for McDonald's. So the question is, and what I want you to do is to think about how you will go about making a decision on where to eat. It's a very simple question. I want people to participate in this. Mia Hamza Akhtar. Bakhtawar, I wish you had asked me.
I would first go to McDonald's and then go to KFC. Okay, okay. So that's one way of resolving the issue. What else? What else would people frequently do? So there are two permutations here, right? One is that you want to go to McDonald's and your friend wants to go to KFC. Um, and that happens day in day out, right? कि आप कहते हो यार मैंने पिज़्ज़ा खाना है, वो दोस्त कहते हैं नहीं मेरा आज पिज़्ज़ा का मूड नहीं है, बर्गर खाना है. What do you do ordinarily? What's one solution to this problem? So I'm going to cold call people and I would expect people to try and respond to this. Fiza Amir. दोनों अपनी मर्जी के खा सकते हैं. Okay, Harun, interesting idea, but look, अगर दोनों अपनी मर्जी का खा सकते हैं तो एक रेस्टोरेंट जाएगा, दूसरा दूसरे रेस्टोरेंट जाएगा, right? So इकट्ठे तो खाना नहीं खा सकेंगे. So the assumption is कि दोनों ने एक ही जगह पे जाना है और टाइम कम है तो वो एक ही जगह पे खाना खा सकते हैं. क्या करेंगे जब आपके साथ ऐसे होता है? आप अपने दोस्त को क्या कहते हैं? सर फूड पांडा से मंगवा सकते हैं. नहीं, आपने जाके खाना है, फूड पांडा नहीं है. चले सर मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू कर लें और केएफसी में जाके बैठ के खा लें. Okay, so okay, that's one option. What else? So what is actually happening in this situation? Look, one friend wants to eat McDonald's, right? And the other wants to eat KFC. So what have you done? You've effectively found out a way where the wants of both people can be satisfied, right? That's what you've effectively done. So what has happened is कि you said कि ठीक है, हम आपकी पसंद की चीज भी खा लेते हैं, हम एक जगह से पिक कर लेते हैं, दूसरी जगह पे बैठ के खा लेते हैं. या दूसरी ऑप्शन हो सकती है कि दोनों दोस्त कहें कि यार आज तुम मेरी जगह पे चलो, आज KFC चलते हैं, अगली दफा जब मैकडॉनल्ड्स जाएंगे तो मैं तुम्हें खिला दूंगा, right? Again, a solution that we do repeatedly. What is important to understand in this example is that decision making here is being done between two parties, right? And you can only make a decision with respect to a particular outcome once there is mutual consensus on a solution, right? So both of you need to agree to a particular solution. That's the very basic outcome of this hypothetical, right? ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा कहीं चला जाए, दूसरा बंदा कहीं चला जाए. You have to reach an agreement, which basically means that it has to be made with the mutual consensus of both parties. So that decision could be कि आज हम दोनों KFC खाते हैं, अगले दिन मैं तुम्हें मैकडॉनल्ड्स खिलाता हूँ, या जैसे किसी ने कहा कि पहले हम KFC के ड्राइव थ्रू से मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू से खाना पकड़ लेते हैं, फिर KFC बैठ के खा लेते हैं. What is essential and the takeaway, the underlying portion that I want you to hang on to at this point in time is that when decisions are being made between two people, ordinarily both must agree to that decision, right? So there has to be mutual consensus, or what we call, there has to be unanimity. Between those two parties, you and your friend, you must unanimously agree to one particular solution. Okay, and that solution, as we discussed, could be KFC, it could be McDonald's, or it could be both on a given day. Okay, so let's suppose now, for an example, that your entire class of, let's say 50, I was assuming you guys would be 50, but let's suppose you are just 30 and all of you have to decide the same question. One of you is perhaps throwing a party, and so the class needs to decide कि आज हम KFC खाएंगे या McDonald's खाएंगे. What's the difference between making a decision with respect to two people and then making a decision with respect to the entire class? What has changed during this period? Again, assume that you cannot, it's not like you can split the class. So if there are 50 people, 25 go to KFC and 25 go to McDonald's. That's not the point. The point is that the class as a collective group has to go to one place. What will happen? Okay. So the majority has the authority, sir. So the majority will decide. Why? So voting होगी. Why will the so this is interesting. Just Sir, hang simple on. majority. Simple majority. Hang on. Abdul Qasi has raised a good point. He said a simple majority would decide, but then go back to the previous example where we were talking about two people, right? In that group, we said that a decision has to be made by unanimity. It has to be made by all parties.
चाहे वो 2 ही है लेकिन सबकी डिसीजन या मुशावरत से होगा। इधर Exactly. आप ये कह रहे हैं कि इधर हम एकदम मेजॉरिटी का फैसला मानेंगे कि जी मेजॉरिटी क्या कहती है, क्यों? Yes. So as you said, we have to reach the result. We have to select one of the options, sir. So दो लोगों में सर ऑप्शन यही था कि उन दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, लेकिन इतने ग्रुप में सर हर किसी की रजामंदी लेना इज नॉट इजी. तो इसीलिए कहते हैं सर कि मेजॉरिटी है सिंपल अथॉरिटी, तो सिंपल मेजॉरिटी से सेलेक्ट करते हैं. Okay, interesting. So you are saying that as the size of the decision-making group increases, the costs of making a decision also increase. Is that a right summary of what you've just said? Sir, can you please repeat? मैंने ये कहा कि आपने बेसिकली कहा कि जूं एक ग्रुप का साइज बड़ा होता है तो उस ग्रुप को फैसला साजी करने में दिक्कत पेश आती है और लिहाजा जो कॉस्ट इनकर होती है फैसला रीच करने में वो बढ़ जाती है, टाइम ज्यादा लगता है, बहस करनी पड़ती है. Okay, so I think Abdul Qasi ka jo point is valid, and what he's basically pointing towards is that, and this is an economic term in economics which is called transaction costs, right? कि जब decision making group बड़ा हो जाए तो जो costs of transacting have increased, the cost of exchange have increased, the costs of reaching a decision have increased, right? जब तक तो दो लोग थे, आप और आपके दोस्त, तो it's very easy, you can find a way out. जिस तरह किसी ने कहा ड्राइव थ्रू में से चले जाते हैं, या मैंने कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता, I would have offered my friend कि यार आज मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, कल तू मुझे खिला दी, let's go to my place, right? So what is happening in the first case is that you're bargaining, right? You're exchanging votes कि आज मेरी जगह पे खाओ, कल मैं तुम्हारी जगह पे खा लेता हूँ. With two people, it's much easier because they're just two people that have to be convinced. But in a larger group, right, the problem is that you cannot achieve consensus. Why? Because as Abdul Qasi said, people have divergent preferences. किसी की preference KFC हो सकती है, किसी की preference McDonald's हो सकती है. And लिहाजा, the costs of making a decision will increase exponentially. And so as Abdul Qasi said, we will shift from a rule of unanimity for decision making. Rule of unanimity कहता है कि जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग उनकी मशावरत से फैसला किया जाएगा, जिस तरह 2% एग्जांपल में हमने किया. लेकिन जैसे अब्दुल कासी ने कहा कि when the size of the group increases, जब क्लास की बात हो रही है तो perhaps it's more efficient, it's fair to let the majority decide on behalf of the entire class. Why? Because it's just simply not possible to have everyone arrive at the same outcome. And so the key takeaway from this example, a very simple example, is that decision making in larger groups is costly. And so therefore, you would shift from a rule of unanimity for making decisions to a rule of majority. यहाँ तक clear है? किसी को सवाल तो नहीं है कि rule of unanimity क्या है, rule of majority क्या है? No, sir, clear. No, sir. Okay, so let's just move forward. Now, think about this as an example. Now assume that the same class has to vote on the following proposal floated by, let's say, the student union. And the example is, I hope it's interesting, Kiji, in light of the Supreme Court's decision to uphold the conviction of Nawaz Sharif for corruption, all existing supporters of Nawaz Sharif in the student body who continue to support the convicted leader should be removed from college. The union argues that such students will give the college a bad name. Assume there is a very small minority of students who still support Nawaz Sharif in the college. How should this decision be made? Maybe Abdul Qasi wants to respond to this. Sir, it's a little moving towards a political ideas or a political perceptions. So I don't think so, sir. होना भी नहीं चाहिए ना इस तरह है कि political base में students को निकाला जाए यूनिवर्सिटी से. क्यों? क्योंकि सर हर किसी की अपनी थिंकिंग है, हर किसी की अपनी पॉलिटिकल आइडियाज हैं, हर किसी की अपने सोचने का तरीका है. तो बट अब्दुल कासी majority decide कर रही है. आपने अभी पिछली स्लाइड पे कहा majority authority. नहीं सर, ये मेजॉरिटी डिसाइड नहीं करती सर. ये जो पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं, ये चीजें सर, ये मेजॉरिटी डिसाइड नहीं करती. यार किसी की अपनी जात के ऊपर अपनी अथॉरिटी होती है कि वो क्या डिसाइड करना चाह रहा है और वो क्या व्हाट ही वांट्स टू डू. तो Okay, ये मेजॉरिटी डिसाइड नहीं करती. Okay, so your response to this argument is कि
क्योंकि ये एक contested political question है जिस पे लोगों की personal affiliations या political views हो सकते हैं, तो उन views की वजह से उनको persecute नहीं करना चाहिए, right? Exactly, sir. Exactly. Okay, what if the student union now says कि all people whose name starts with A shall be removed from college? और majority इस motion को pass कर देती है। और उसके अंदर of course आप भी निकाले जाते हैं क्योंकि आपका पहला नाम A से शुरू होता है। इसमें तो कोई political view नहीं है। इसका क्या जवाब है? ये सही है? अगर majority ये करे? Majority करे, sir. We'll find an alternate process for it. We'll appeal, sir. We'll go for appeal. हाँ, but do you think it's fair for the majority to do that? I don't think so, sir. It is fair. It's not It's not fair, sir. लेकिन अगर sir fair for the majority to बच्चों के नाम A से start होते हैं उन सबको college में डालना चाहिए। सर दो It's तरीके not होते fair, हैं। right? सर somehow मैं इस तरह इसको सर आर्ग्यू करूंगा कि सर पहले तो देखिए सर सिंपल मेजॉरिटी होती है सर कि 60-40 की सिंपल मेजॉरिटी होती है, लेकिन सर अगर ये पॉलिटिकल यहाँ पर जो यूनियंस वाली जो आइडियाज है सर, यहाँ पर यूनियन में भी सर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेस्ड जो है ना सर आइडियाज आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो यहाँ पर सर आई थिंक इस मामले में ये अनफेयर होगा। अच्छा ठीक है। Okay. Anyone else wants to add apart from Abdul Ghazi? I want other people to contribute to the discussion also. Anyone else? So think about what is happening in this case. On the previous slide, Abdul Ghazi told all of us that तमाम लोगों की मशावरत से नहीं हो सकता, सब लोगों की divergent preferences होती है, तो majority को जी decide करना चाहिए. So that's the rule that he deduced from that situation, right? And his deduction of that rule was based on grounds of efficiency. It's more efficient. It's impossible to have the unanimous consent of all people. Therefore, we should have majority rule because let's suppose Locke once said majority is authority. And hence, majority को सारे फैसले करने चाहिए। अब हम अगली स्लाइड पर आए हैं, तो हमने अब्दुल कासी से पूछा है कि क्या ये फेयर है for the majority to decide such issues? तो अब्दुल कासी ने कहा कि नहीं, मेरे हिसाब से majority को ये फैसला नहीं करना चाहिए। So you can immediately see that there is a tension here, right? On one hand, you want certain decisions to be made by the majority. Why? Because सबकी consent लेना impossible. On the other hand, there is a risk that there are certain decisions that a majority might take which might intuitively feel or at least appear to be unfair on the face of it, right? And an example of an unfair decision would be this voting decision that the Senate or the student union of a particular college adopts. So we can immediately begin to sense that there's a tension now between two competing ideals. एक तरफ हम एफिशिएंसी ग्राउंड्स पे चाहते हैं कि मेजॉरिटी फैसला करे, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी नजर आ रहा है कि अगर मेजॉरिटी को हमने हर चीज का फैसला करने दिया तो कहीं कहीं पे ज्यादती हो सकती है. एंड what is happening is, and this is the portion at the end, कि under majority rule, the decision of the majority can impose costs on the smaller group who do not agree with the majority's views. So in this case, if the student union gets to have its day in college, people who were supporters of Nawaz Sharif will be kicked out. And so the decision of the majority of the student union will impose what we call external costs that are external to that group on students who do not agree with the majority. Any comments on this or any questions? Agar ye nahi samajh aaya, you can stop me and ask me about this, because this is going to be an important foundation that we're trying to lay down before we move forward. Sir, samajh aa gaya. Okay, anyone else who very quickly wants to add to anything that we've discussed so far? Okay, so let's just move forward on where we are, right? So here's the paradox, and I think the paradox has become very apparent from the first 3 slides of this discussion.
And the paradox is कि in collective choice, and collective choice basically means कि whenever decisions are being made by more than one people, it could be 2, it could be 3, it could be 5, it could be 10, it could be 100, and those decisions could be within your household कि आज रात को खाना क्या बनना, that is also a collective decision. It could be a decision that is made in college by the student union. It could be a decision made by the class. It could be a decision made by a group of friends, or it could be a decision made by your elected representatives in parliament, right? In all cases, in all these cases, right, wherever collective choice is being examined, there is what we call a fundamental trade-off between two competing costs, right? And we've examined what those costs are. The first are the costs, the decision costs, right? Which is over here. आपको शायद slide पे नजर आ रहा होगा. Decision costs are those costs that you incur in order to reach a particular decision, right? So पहले second example में जहाँ पे 50 लोगों ने decide करना था खाना क्या खाना है, वहाँ पे अब्दुल कासी ने कहा कि decision costs बहुत ज़्यादा होंगी जी, क्योंकि किसी का कोई जी चाहता है, किसी का कोई जी चाहता है, so सबको एक रेस्टोरेंट पे कन्विंस करना मुनासिब नहीं होगा या feasible नहीं होगा. क्यों? क्योंकि decision costs बहुत ज़्यादा है. Costs of negotiations, cost of bargaining, costs of discussing, and so on and so forth, right? So that's one aspect. इसी तरह जो दूसरी important cost है, that is external costs, okay? External costs are costs that a group imposes on others who do not agree with them, right? And so graphically, I will try and actually annotate this for you so it becomes a bit clear. Let's suppose that this is 0. This is the number of participants or the number of people in a group जो फैसला कर रहे हैं. वो group आपकी class हो सकती है, आपके घर वाले हो सकते हैं, या आपके politicians हो सकते हैं. ये cost. So graphically, you can represent the relationship between these two costs as follows, right? As the number of people increases from 0 to, let's say, 100 or whatever number you have over here, the decision costs will of course increase. ठीक है? Very simple. क्योंकि लोगों की तादाद बढ़ गई. जब तक तो 2 लोग थे तो बड़ा आसान था, अपने अपने दोस्त को कहा यार आज मेरा वाला खाना खा लेते हैं, कल तुम्हारा वाला खा लेंगे, बड़ा आसान है. लेकिन जो क्लास का साइज बढ़ रहा है 10, 15, 20, तो कॉस्ट्स बढ़ रही हैं, बिकॉज कुछ बच्चों से आपकी बनती नहीं है, उनको आप कन्विंस नहीं कर सकते. कुछ जो ग्रुप बढ़ रहा है, ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, लोगों की प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रही हैं. इसी तरह दूसरी तरफ is the relationship between external cost, right? कि जो number of participants या number of people involved in a decision making increase करता है, external cost कम होती चली जाती है, right? So और जो number of people कम होता है, external cost बढ़ती चली जाती है. So this is how we can graphically represent this. I hope this is fairly simple, right? So this is the relationship between the two costs. Now I need to figure out how to remove this. Okay, just one second. All right, done. Okay, so in any collective setting where collective choice or decisions are being made collectively, right? You need to strike a balance between these two trade-offs, between decision costs on one hand and between external costs on the other. And so what is a key in determining कि वो cost कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी? एक तो of course number of participants हैं, ठीक, कि अगर 2 दोस्त हैं तो बड़ा कम होगा, अगर 50 लोगों की क्लास से ज़्यादा cost बढ़ जाएगी, अगर 100 तो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. But जो key determinant है वो voting rule है. What is the decision-making rule that you adopt as a group, right? So that decision-making rule could be a rule of unanimity. A rule of unanimity वो rule है जहाँ पे तमाम लोगों की consent और vote चाहिए है to achieve a particular outcome. All 50 of you must select KFC in order for you to eat KFC as a class. Even if one student says कि नहीं मैंने McDonald's खाना है, तो decision making नहीं हो सकेगी. Cost of decision making ज़्यादा हो गई, फैसला रीच नहीं हो सका. So जिस तरह अब्दुल कासी ने कहा था कि आप इस स्पेक्ट्रम पे, इस लाइन पर, maybe you choose simple majority कि जी majority is authority and so on and so forth. इसी तरह
you could have a rule of, let's say, dictatorship, where you say कि इस group के तमाम फैसले ये एक ही बंदा करेगा. Now, is dictatorship always bad? That's my question. Yes, sir. Is it Yes, really sir. bad? is always Bad. there. Yes. Okay, one person, maybe Musab al-Haq शायद कुछ कहना चाह रहा है. यस सर, डिक्टेटरशिप बैड होती है क्योंकि वो एक बंदे का फैसला सारों पे मुसल्लत कर दिया जाता, किसी की कोई राय नहीं ली जाती, वो जस्ट अपना डिसीजन सब पे मुसल्लत कर देता सर. ठीक है. Yes, sir. मुसब, There is no आपके- opponent. अच्छा, इस्माइल क्या कह रहा है? Yes, sir. There is no opponent, sir. Always dictating. Dictatorship is always dictating. Okay. Okay, interesting. So let me ask you this question, Musab. आपके घर में ये कौन डिसाइड करता है कि रात का खाना कौन क्या बनेगा? सर हमारे घर में वैसे तो बनता नहीं है, वैसे अगर बनना हो तो वो बच्चों से पूछ लेती हैं वालिदा कि क्या बनाना है आज का. अच्छा, so आपके घर में डिक्टेटरशिप नहीं है, इसका मतलब है यस ना? सर. यस किसी सर. के घर में डिक्टेटरशिप है, क्योंकि मेरे घर में है. मेरे घर में एक फर्द है जो फैसला साजी करते हैं कि खाना क्या बनेगा. Not to say कि वो गलत है, but I'll explain why. Anyone else जिसके घर में कोई एक फिगर हैं जो कहते हैं घर पे कि जी ये खाना बनेगा बस? मेरे घर में मेरे घर में एक बंदा है जो डिसाइड करता है कि खाना क्या बनेगा. हाँ, so हमारे घर में भी कुछ ऐसी है. So let's Yes, open sir. up. Actually, it's the same case. अब Can we ईसा do it? जी या मनूर. सर आई थिंक डिक्टेटरशिप का ये फायदा हो सकता है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि जब एक बंदा डिसाइड करे तो सिर्फ एक मतलब कि कंसिस्टेंट चीज आ रही है, जबकि ज्यादा बंदे डिसाइड करेंगे तो वो इनकंसिस्टेंसी पैदा हो जाती है. हाँ, good. That's a good point. That's actually where I wanted to come. So, for instance, मेरे घर में more or less there's a dictatorship in terms of selecting कि रात को घर में खाने में क्या बनेगा, right? Now, what happens is कि of course whatever choices are made by that one person, हमारे घर में किसी ने फैसला किया. लेकिन अगर हम इसी स्पेक्ट्रम पे रूल ऑफ यूनानिमिटी को अडॉप्ट करें तो होता क्या है? होता ये है कि लिटरली 2 घंटे लग जाते हैं कि पहले एक भाई को इकट्ठा करो, फिर दूसरे को इकट्ठा करो, फिर एक ऑफिस गया हुआ है, एक घर पे नहीं है, एक स्कूल है, तो जी वालिद साहब से पूछो क्या खाएंगे, वादा साहिबा से पूछें कि वो क्या पसंद करेंगी. सो इफेक्टिवली द कॉस्ट्स ऑफ मेकिंग अ डिसीजन एज टू व्हाट टू that the group, i.e. my household, fails to reach a decision, right? And it takes just too much time, right? So in this setting, as Manur said, maybe it's appropriate to have some sort of a dictatorship, right? And one could delegate this to maybe your younger brother, maybe your mom, or maybe your dad, and say कि जी आप फैसला कर लें क्या बनाना है. लेकिन इसमें एक नुकसान क्या है? सो डिसीजन कॉस्ट तो आपने कम कर ली डिक्टेटरशिप अडॉप्ट करके, क्योंकि एक ही बंदा फैसला करे, बात खत्म हो गई, राइट? व्हाट्स द अदर कॉस्ट? Sir, what if we make a chart for each day and divide it on each day, that Monday के दिन ये बनेगा, Tuesday के दिन ये, but एक बार बैठ के सब डिसाइड कर लें. ये भी हमने करने की कोशिश की थी. आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस इट वर्कड फॉर अ वीक और सो, उसके बाद इट स्टॉप्ड वर्किंग. अच्छा. हाँ. But let's suppose कि हमने डिक्टेटरशिप अडॉप्ट कर लिया बिकॉज हमें लगता है कि ये बड़ा कॉस्टली है, डिसीजन कॉस्ट बहुत बढ़ गई हैं. सो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर एक बंदा डिसाइड कर रहा है तो एक्सटर्नल कॉस्ट्स कम होंगी, ज्यादा होंगी? तो ज्यादा हो गई. ज्यादा होंगे, एग्जैक्टली राइट. सो एक्सटर्नल कॉस्ट्स बढ़ जाएंगी. सो हो सकता है कि आपके घर में जो भी ये डिक्टेटरशिप या और कहने का मकसद बाय द वे ये है कि डिक्टेटरशिप जरूरी नहीं है बुरी हो. इन सम सेटिंग्स इट्स एक्चुअली बेटर, इट्स मोर एफिशिएंट. एग्जांपल my household at least, right? It's more efficient. So but as I said कि even though it's more efficient, decision costs कम हो गए, external costs बढ़ सकती हैं कि ओहो मैं तो लेट्स से फलां चीज नहीं खाना चाहता था, ये क्या बन गया आज रात को, ओहो मैं तो ये तो ज्यादती हो गई, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है खाने का, and stuff like that, right? So in such cases, what do you think my household, or maybe if you have the same experience your household does, कि जब आप कहते हैं okay, so let's just think about it this way, right?
घर में रात का खाना बने, आपने एक शख्स को डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी के, यार आप डिसाइड करें कि रात को खाना क्या बनेगा, सबके बिहाफ पे हम खा लेंगे, राइट? डिसीजन कॉस्ट्स कम हो गई, लेकिन एक्सटर्नल कॉस्ट्स ज्यादा हो गई, क्योंकि कोई ऐसी चीज भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारी पसंद की ना हो। सो आप उस एक्सटर्नल कॉस्ट को कम करने के लिए क्या सोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? सर सर ये भी तो हो रिस्ट्रिक्शन सकता लगा है। सकते हैं। सॉरी? सर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि ये चीजें नहीं करनी। हाँ, आपके घर में है ऐसी रिस्ट्रिक्शंस अवैस? सर हारून ने कहा, मैंने ऐसा बात नहीं की सर, हारून कह सॉरी, रहा है। हारून साहब, आपके घर में है ऐसी रिस्ट्रिक्शंस? सर है तो नहीं। हाँ, सर नहीं है। अच्छा, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आपने कोई नहीं लगाई, जो मर्जी बना ले? वैसे नहीं, जी सर। अच्छा, हमारे घर में है। सो आई गिव एन एग्जांपल। हमारे घर में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि टींडे, क्योंकि मेरे दो भाई नहीं खाते, टींडे और बैंगन नहीं बनेंगे, बाकी जो मर्जी बना लें। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि इन ऑर्डर टू लिमिट external costs, what have we done? We have put a restriction on what that dictator can do, right? Now within सर that, हाँ एक सेकंड, let me just finish। हाँ चलो, आप बताइए। सर अगर एक तो सर जिसमें हम लिमिटेड कर दें सर हम जो चॉइसेस हैं, और दूसरा सर अगर उनके फायदे और जो उसके साइड इफेक्ट अगर उनको हम बताया जाए तो सर वो भी तो कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है सर अगर जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे लोग उसको चूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सर अगर KFC और हम मैकडोनल्ड की एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि KFC ज्यादा हाइजीनिक है और वो हेल्थ के लिए बेटर है, तो ज्यादा मेजोरिटी जो है वो KFC की तरफ जाएगी, ना कि मैकडोनल्ड की तरफ से। क्योंकि अगर हम मैकडोनल्ड को दूसरी साइड पे रखते हैं कि वो एक अनहाइजीनिक फूड है और वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो सर ऑब्वियसली सर आपके जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो हाइजीनिक की तरफ जाएंगे सर। हाँ, ये भी एक तरीका है, लेकिन अभी घर की एग्जांपल पे हम आते हैं ना वापस। देखें, घर में द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज के इन एनी कलेक्टिव सेटिंग यू हैव टू चूज अ डिसीजन मेकिंग रूल, कि फैसला साजी रूल ऑफ यूनैनिमिटी के तहत होगी, सिंपल मेजोरिटी के तहत होगी जैसे अब्दुल कासी ने कहा, या डिक्टेटरशिप के तहत होगी। सिंपल मेजोरिटी पे तो हम बहुत बात करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल सेटिंग्स में वही रूल अडॉप्ट होता है, बट मैं अभी इस वक्त फंस गया था कि डिक्टेटरशिप पे, रूल ऑफ वन पर्सन। ये दो एक्सट्रीम्स है, रूल ऑफ यूनैनिमिटी इस साइड पे, रूल ऑफ वन इस साइड पे। और रूल ऑफ वन पे मैं ये अर्ज कर रहा था कि जरूरी नहीं है कि रूल ऑफ वन हर सेटिंग में बुरा हो। इन सम सेटिंग्स रूल ऑफ वन या डिक्टेटरशिप ज्यादा अप्रोप्रिएट है या ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कॉस्ट्स एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि एक ही बंदे ने फैसला करना है ना, वो जो मर्जी फैसला करे। हाँ, अब उस फैसले में ये रिस्क है कि आपके ऊपर या मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल कॉस्ट इंपोज हो, कि लेट सपोज अगर मेरे वालिद साहब घर का मेन्यू डिसाइड करते हैं, तो वो कुछ ऐसी चीजें हफ्ते में बनवा लें जो मैं पसंद नहीं करता, जो मेरा दिल नहीं करता खाने का। तो क्योंकि उसमें मेरी कंसेंट शामिल नहीं थी, जो उन्होंने चीजें मेन्यू पे डाल दी और घर में बन गई, तो उनके फैसले से, उनके डिसीजन से मेरे ऊपर एज एन इंडिविजुअल एक एक्सटर्नल कॉस्ट इंपोज हुई, राइट? और मैंने वो कॉस्ट इनकर की। नाउ अगला सवाल मेरा ये था कि इस सिचुएशन में हम एक्सटर्नल कॉस्ट को लिमिट कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? उसका जवाब किसी ने, आई थिंक हारून ने शायद दिया, कि उसका तरीकेकार ये है कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जो डिक्टेटर है वो क्या फैसला कर सकता है। और मैंने फिर मिसाल दी कि हाँ, मेरे घर में फॉर इंस्टेंस कुछ सब्जियों पे रिस्ट्रिक्शन है कि ये नहीं बनाई जाएंगी क्योंकि फला फला भाई ये सब्जी नहीं पसंद करता या नहीं शौक से खाता, राइट? सो दिस इज हाउ you might have a dictatorship, but you have a set of higher rules that limit what that dictator can do, right? Now hang on to that thought for a moment and let's just move past this discussion, right, and come back to this idea of rule of unanimity and rule of majority. We started off, remember, from the first slide from the rule of unanimity, and then we concluded कि 52 लोगों में तो ये आप कर सकते हैं, 50 लोगों में करना मुश्किल है, वहां पे सिंपल मेजॉरिटी अप्रोप्रिएट है इन दैट सेटिंग, राइट? बट देन आई गिव यू अनदर एग्जांपल वेयर लेट्स से दैट सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू एक स्टूडेंट यूनियन एक फजूल किस्म का और अनफेयर फैसला इंपोज कर रही है ऑन अ स्मॉल माइनॉरिटी, राइट? और जब वो
फैसला impose कर रही है on that minority. So what is actually happening is that the decision of the majority, i.e. the student union, is imposing an external cost on the minority. Okay, is that clear? Is that framework clear of how to think about decision costs and Yes. external costs? Yes, sir. Yes. Okay, so now take this framework that we've just discussed and bring it to the political setting, right? So here's the first question for all of you. Okay, under what decision-making rule are political decisions made? कानून कौन सा पास होना है, ये कौन डिसाइड, कैसे डिसाइड होगा? Sir, majority voting. ये Sir, किसी majority के voting. हाँ, majority voting से, right? That's correct. So majority voting से होता है. So what's the problem with majority voting that you've just seen? मैम प्रॉब्लम मेजोरिटी वोटिंग में सर ये होती है कि जो माइनॉरिटी होते हैं तो उनका कोई भी कंसेंट फिर उसमें नहीं होता, या उनके हिसाब से वो वाला डिसीजन जो होता है उनके अगेंस्ट होता है. Good. So a decision made by the majority can impose an external cost on the minority who do not agree with that decision, right? कि अगर 50 लोगों में से 40 कह रहे हैं कि हमने मैकडॉनल्ड्स खाना है और 10 कह रहे हैं हमने KFC खाना है, तो वो 40 का फैसला बाकी 10 पे कॉस्ट इम्पोज कर रहा है जो वो नहीं खाना चाहते थे. इसी तरह पॉलिटिकल सेटिंग में मेजॉरिटी का cost impose कर सकता है on the minority. So what is the risk that arises in a political setting is as follows. Okay, when you shift from a rule of unanimity to a rule of majority, right? The risk is that you can create a tyranny of the majority, something that you would have studied again and again, I'm sure, in constitutional law and other related subjects, right? So once you recognize कि majority rule में ये risk मौजूद है, you have to understand that before that shift can take place, right, from unanimity to majority, people will want to seek some sort of protections behind, let's say, a Rawlsian veil of ignorance, because people don't know कि कल को वो एक majority में होंगे या minority में होंगे. उनको क्या पता कल क्या फैसला होना है, कल क्या फैसला नहीं होना. So before a shift of that magnitude or of that nature takes place, people will want to seek some sort of protections. And what is the essence of the protection that they're seeking in a system of majority rule? The essence is that they are trying to limit the powers of the majority. Okay, so student union की powers आप limit कर रहे हैं, आप recognize कर रहे हैं ने जैसे कहा कि भाई आप यूनानिमिटी से फैसला नहीं कर सकते, 50 लोग बहुत ज्यादा हैं, कभी भी कंसेंसस अचीव नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मेजॉरिटी रूल से जी फैसला करते हैं. स्लाइड 2 में अब्दुल कासी ने कहा, स्लाइड 3 में अब्दुल कासी ने कहा ओहो ये तो बड़ी ज्यादती कर रही है स्टूडेंट यूनियन मेजॉरिटी रूल से फैसला करके, मुझे स्टूडेंट यूनियन को मेरा ख्याल है ये फैसले नहीं करने चाहिए. So what was Abdul Qasi doing? He was trying to limit the powers of the majority. On one hand, he was saying कि majority को power दो, अगली slide में वो कह रहे थे कि majority की powers को limit किया जाए. And so people like Abdul Qasi will then seek some sort of protections, some sort of safeguards. And then the next question, of course, is कि what do those protections look like? And as someone said, कि those protections will look something like the following. ठीक है, कि student union डे टू डे फैसले करे कि उसने क्या पोजीशन लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन उसके जो फैसले हैं वो सर्कमस्क्राइब्ड है बाय सम हायर सेट ऑफ रूल्स. वो रूल्स उस स्टूडेंट यूनियन का मैनिफेस्टो हो सकता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो हो सकता है, एक घर में एक डिक्टेटर को दिए गए हुए डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं कि प्लीज सब्जी नहीं बनानी हर फ्राइडे को. सो डिसीजन मेकिंग in a setting is constrained by a set of higher rules, right? Now, those higher rules, of course, will be the rules of the game. कि उन higher rules के तहत कैसे game खेलनी है, क्या फैसला साजी करनी है, क्या फैसला साजी नहीं करनी. What is essential to understand is कि those higher rules are constraining the choice made by the majority.
as Abdul Qasi said, कि हमें majority के ऊपर restriction लगानी है, कि political views के ऊपर किसी को निकालना अच्छा बात नहीं है. ये बात अच्छी नहीं है कि यूनियन कह दे कि जी all people in UMT starting with the name A shall be removed from college. ये गलत बात है, ये हमें intuitively unfair लगती है. So हम कहते हैं कि सही है, majority rule से फैसला करें, majority rule is authority, let's assume for a second कि we concede to that proposition. But then at the same time, while you're giving the majority a power, you're trying to constrain and limit those powers, okay? And so what you have to understand is that in political settings, those higher rules would take the shape of the constitution, right? And so what function is that higher rule or is that constitution performing? It's limiting, it's controlling powers. It's essentially counter majoritarian. वो majority की power को restrain कर रहा है. आपका दस्तूर, आपका आइन का बुनियादी मकसद मेरी नजर में, और लोगों के इसके ऊपर मुख्तलिफ व्यूज भी मौजूद हैं, वो ये है कि आपने majority की powers को limit करना है, majority की powers को control करना है. That is the idea of constitutionalism. And so you will find that there is a tension throughout constitutional law between majoritarianism on one hand, कि एक जगह आप majority को इख्तियार देना चाहते हैं कि भाई आप फैसला करो अपनी तकदीर से मुताल्लिक, आपके मुंतखब नुमाइंदा फैसला करें कि इस मुल्क ने आगे कहाँ जाना है, इस क्लास ने आगे कहाँ जाना है, इस स्टूडेंट यूनियन ने इस स्टूडेंट बॉडी को आगे लेके कहाँ जाना है. लेकिन एक तरफ आप उस मेजॉरिटी को फैसला दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम उस मेजॉरिटी की चॉइसेस को कंस्ट्रेन करेंगे through a set of higher rules. And this is where constitutionalism or where constitutional law comes in. So there is an inherent tension between these two competing ideals. Majoritarianism on one hand, constitutionalism on the other. And at the heart or at the core of this tension lies the trade-off between external and decision costs. कि एक तरफ आप चाहते हैं कि फैसला साजी एफिशिएंट हो, आसान हो, तेजी से हो, जल्दी से हो. दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं कि उस तेजी में, उस जल्दबाजी में, उस एफिशिएंसी की ग्राउंड्स की बेसिस के ऊपर और लोग मुतासिर ना हो, कोई अनफेयर, अनजस्ट फैसला ना हो that imposes an external cost on others who do not agree with the majority's decision. Okay, is that clear? This conceptual idea of a constitution. Okay. Yes, sir. And you can also see this tension play out in pre-partition India also. I can spend an entire day talking about this because again this is very, very fascinating. But if you think about it, जो demand है for Pakistan, historically speaking, uske at the core of that issue was a constitutional problem. Exactly the same problem that we are identifying here. वो क्या problem थी कि एक तरफ कांग्रेस है जो majoritarianism के well perhaps it would be wrong to say कि majoritarianism में believe करती थी, but to say कि it was pushing the idea of majoritarianism, right? कि we are representing all of India and democracy होनी चाहिए, one person, one vote, और you know, we represent all the Indians and so हम फैसला साजी करेंगे कि future shape of India क्या होना चाहिए. दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग है या जो मुसलमान है वो एक minority है in pre-partition India. और वो क्या फेयर कर रहे हैं? वो यही फेयर कर रहे हैं कि in a democratic system जूं representation pre-colonial India, pre-partition India में बढ़ती जाएगी, democracy आती जाएगी, responsible government आती जाएगी, हम लोग as a minority, we will be at the mercy of the majority of the other group, which is the Hindus, right? And so what are they seeking? They are seeking constitutional protections again and again and again. The partition of Bengal, Jinnah's 14 points, the idea of autonomous regions, the idea that those regions should have autonomy, the idea that the Muslims should have some stake at the center. वो क्या demands हैं? वो constitutional demands हैं, right? So you can see this tension between limiting the powers of the dominant ethnic group, i.e. the Hindus, and this demand is being pushed through by the Muslim community. And then on the other hand is Congress and the other groups which say कि नहीं democratic framework में हमने चलना है. So जो majority कहेगी वो सही है.
और majority तो हिंदू हैं, तो oh sorry, too bad, we can't do anything about it. So you see this tension play out in pre-partition India also, and it is a precursor to the demand for Pakistan in many ways. So that's besides the point, but I think the point is fairly clear. So what I want you to take away from this first part is that constitutional safeguards are needed when we switch from a rule of unanimity to a rule of simple majority, right? And those safeguards, of course, in a political setting, again, this is something that one can teach an entire course on. But then those safeguards will be a set of higher rules that are beyond the pale of legislative majorities. कि जो majority है, वो उसको change ना कर सके उस higher rule को. अगर मैंने एक मेजॉरिटी को एक रिस्ट्रिक्शन दिया कि इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहते हुए आपने काम करना है, तो उस रिस्ट्रिक्शन का कोई फायदा नहीं है अगर वही मेजॉरिटी उस रिस्ट्रिक्शन को चेंज कर सकती है. दिस इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो होता है, इट रिक्वायर्स अ सुपर मेजॉरिटी, नॉट अ सिंपल मेजॉरिटी, राइट? इसी तरह you have a government of enumerated powers. The idea of a government of enumerated powers under Article 4, the idea of fundamental rights and independent judiciary, and then separation of powers and bicameralism and federalism. So where are we? Okay, so I think I've spent a lot of time on this part. Sorry, if I may ask a question, but that is going to be, of course, discussed later when you have the time. आपने यहाँ पर जब सुपर मेजॉरिटी की बात की और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इफ यू कैन कनेक्ट इट टू आवर ऑफ कोर्स द प्रैक्टिकल सिचुएशन कि इन रियलिटी हम देखते हैं कि अमेंडमेंट्स आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आती हैं, एंड दे आर आल्सो एट द whims of whoever is has the highest authority, being a person has the highest authority, whether it's the dictator or the majority authority or the जो गवर्नमेंट में पावर में है पार्टी. तो थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिले तो एंड में इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के ये अक्सर सवाल होते हैं that this frustration comes out that even having the law and all the setup and the constitution, but still how that is manipulated or being used for their personal choices and the whims. But later, at the end of the session. जी, जरूर, definitely. Thank you. I'll try and keep this in mind. If I forget, so please kindly remind. I will. Thank you so much. Thank you. No problem. Acha ji. Okay, so where were we? So we were talking about this the idea. So part one, of course, was this theory, this idea of trying to understand what purpose or what role a constitution fulfills in any given political setting. उसमें हमने external costs की बात की, decision costs की बात की, rule of unanimity, rule of simple majority, and so on and so forth. And we basically said, look, the constitution is there to limit the powers of the majority, right? And that remains a tension that is inherent in constitutional law. So now let's just move on from that theory and from that analytical framework that we have developed in part one and try and see how we can apply it into practice, into the Pakistani context. I've actually taken a lot of time, so I will quickly rush through the remaining slides because it will take a lot of time if I spend too much time on this. So now that we've had this thought, we've had this discussion के under the rule of simple majority, हमेशा एक majority होगी, एक minority होगी, और constitution ने उस majority की powers को limit करना है ताकि external cost ना impose on minorities. तो अगला सवाल when you try and apply that theory into practice is कि भाई पाकिस्तान में कौन सी minorities हैं? So here's a question for all of you. कौन सी minorities हैं पाकिस्तान में? Christians, Hindus, Sikh. Hindu minorities. Sorry? Someone Hindu, Manur के अलावा? Christians, Hindu, Christians, and Sikh. Okay, but this is just one sort of minority. Okay, so let's just break this down further. There are two different types of minorities. One are shifting minorities, the other are permanent minorities. Shifting minorities could be minorities that is just part of the losing group in a vote. Opposition. Sorry? Opposition, sir. Opposition आप कह सकते हैं. Opposition भी ना कहें. KFC McDonald's की example है ना, simple. Simplify things. Don't complicate things. Simplify करें. सिंपल एग्जांपल ये KFC मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल में अगर 40 लोग KFC खाना चाहते थे और 10 मैकडॉनल्ड्स खाना चाहते थे तो वो 10 जो है वो माइनॉरिटी,
सिंपल सी बात है, ये शिफ्टिंग माइनॉरिटी है, इस वोट पर ये लोग माइनॉरिटी में। अब अगले एग्जांपल पर आ जाएं, जहाँ पे हमने बात की पीपल हु वोटेड फॉर नवाज शरीफ, उसमें वो लोग माइनॉरिटी में होंगे जिनको स्टूडेंट यूनियन उनके खिलाफ वोट करी है। सो शिफ्टिंग माइनॉरिटीज इशू बाय इशू. The other, of course, is permanent minorities, and we are more concerned when we're looking at the constitution about permanent minorities. And permanent minorities are minorities um, uh, that are identifiable because of an immutable factor that is beyond its control. So race ho gayi, ethnicity ho gayi, religion to some extent, right? So racial minorities, aapne example दी about Christians, Hindus and so on and so forth. ये तो religious minorities हैं, but इसके अलावा भी तो minorities हैं, और वो minorities, हाँ वो minorities कौन सी हैं जी? आपकी racial minorities हैं, आपकी ethnic minorities हैं, बलोच हो गए, सिंधी हो गए, पठान हो गए, and so on and so forth, right? So now think about it. Okay, when you're applying the transaction cost or the external cost framework, you must ask this question, right? Okay, are these groups, are these permanent minorities at risk of being subjected to the tyranny of the majority? And if you read up Pakistani history, I'm sure all of you are aware that there are so many grievances of these groups, of these ethnic groups against the dominant group in Pakistan, which happens to be the Punjabi, and I also happen to be Punjabi, right? So immediately you can figure out that something has gone wrong historically, right? Okay, within this framework, the racial and the ethnic minorities do not look very happy. Balochistan has had its grievances, so has Sindh, and so has KPK, and so on and so forth. So maybe there is something that's messed up, something that we're not doing pretty well. इसी तरह, I think in the Pakistani context, it's always helpful to discuss people talk. This is very famous paper. I will encourage all of you to go and read this by Hamza Alawi, where he talks about national identity, which is of course the Pakistani identity that we all ascribe to, and then within that national identity, there are sub-national identities or aspirations through which we identify ourselves as a Sindhi, as a Balochi, as a Sunni, as a Shia, and so on and so forth. ये सारी हमारी sub-national identities हैं जो equally important हैं according to Alawi. Now, within the literature in constitutional design, there's a concept called a divided society. So remember that there's a distinction between a diverse society and a divided society. A diverse society could be a society जिसमें बहुत ज़्यादा diversity है, मुख्तलिफ groups हैं, but divided society वो है जहाँ पे, as Sujit Chaudhary points out, जो आपके differences हैं वो politically salient हैं. This is very important, right? So of course we have a diverse society, but we just don't have a diverse society. We have a divided society according to Sujit Chaudhary's definition. And what a divided society basically means is कि जो आपके political differences हैं along ethnic or along, let's say, racial lines, they are pronounced and they're politically salient. Now इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे कालाबाग डैम पंजाबीज प्रेफर करेंगे और कौन से ग्रुप्स नहीं प्रेफर करेंगे? बलूचिस्तान अपोज करेगा, केपीके अपोज करेगा और सिंध अपोज करेगा. सो सिंधी, पठान, बलोची कालाबाग डैम के खिलाफ है, पंजाबी उसके फेवर में. टेक एनी अदर एग्जांपल एंड यू विल नोटिस कि जो डायमीर भाषा डैम है उसके फेवर में पंजाबी हैं, लेकिन जो सिंधी हैं वो उसके खिलाफ है. क्यों? क्योंकि अब उसकी रीजन अलग है, बट यू अंडरस्टैंड हाउ a lot of contentious issues are divided along ethnic lines. Ethnic identity becomes important when these differences are being discussed at the national level, right? इसी तरह आप MQM को देख लें. MQM जो है एक पार्टी है जो associated है with the Muhajirs who came from India. People's Party को देख लें, अब at least People's Party pretty much सिंधी पार्टी बन गई है. फिर आपके पास मल्टीपल नून लीग को अगर आप देखें, हाँ आप कह सकते हैं कि इट्स अ मल्टी एथनिक पार्टी, बट लेकिन डोमिनेंट उसकी जो बेस है वो पंजाब है. आप ENP देख लें, ENP अवामी नेशनल पार्टी की डोमिनेंट वोटर बेस कौन है? वो आपके पठान है. सो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी प्रीटी मच बिटी हुई हैं along ethnic and regional lines, right? There's an interesting paper इसी साल में सुल्तान एंड पिकेटी का, जिसके अंदर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ओवर टाइम
कुछ जो आपकी नेशनल पार्टीज थी लाइक द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एथनिक्साइज्ड ओवर टाइम, वो महदूद होती जा रही हैं टू वन ethnic group like the MQM or like the ANP. But of course, there are certain exceptions. The Pakistan Tehreek-e-Insaf is a good example. It's a multi-ethnic party. It's not associated with one group, just Pathans or just Punjabis or something of the sort. Usme ek cross-cutting cleavages aapko milte hain in their voter base. So what is important to understand is, and the takeaway I think from this slide is that Pakistan is considered to be a divided society, right? Now, when we think about a divided society, you have to think about how do we deal with minorities, with permanent minorities in ethnically divided societies, right? How do we protect them? How do we safeguard their interests? And how do we prevent the majority from imposing costs on the minority, the majority being the people in Punjab? Now, I think Madam must have shared a reading with you from Lashpart, who basically lists down two broad principles for constitutional design. कि अगर एक रियासत है और वो ethnically divided है, तो उसके आइन में या उसके दस्तूर में कौन से दो बुनियादी असूल हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है for a divided society. So he says कि दो main rules हैं. एक ये you should have power sharing, and the other that you should have group autonomy. Did someone want to say anything? No, sir. Okay, I guess no. Okay, so for divided societies, what you've got to do is that you've got to encourage the formation of broad governing coalitions so as to minimize external costs, right? Remember that external cost उस वक्त इंक्रीज करती है जब नंबर ऑफ डिसीजन मेकर्स कम होते हैं, राइट? लेकिन अगर आप एथनिक ग्रुप्स के लीडर्स को डिसीजन मेकिंग में हिस्सा दे दें, पावर शेयरिंग में हिस्सा दे दें, तो वन कैन अज्यूम दैट एक्सटर्नल कॉस्ट्स विल कम डाउन, राइट? सो लेट्स जस्ट वेरी क्विकली examine how well we have fulfilled these two principles today, and historically that could be a subject of another session because that will take a lot of time. So power sharing is essentially power sharing in the executive, right? And this concept makes the debate around presidential and parliamentary systems very, very important. Why is that so? What's the problem from this perspective with a presidential system? Anyone who wants to add? मैं रिपीट करता हूँ, डिवाइडेड सोसाइटी में पावर शेयरिंग होनी चाहिए. अब पावर शेयरिंग का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव में पावर शेयरिंग, गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होनी चाहिए. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम with that concept in a presidential system? सर वो minorities पे ज्यादा फोकस करते हैं presidential system में. सर उसमें पावर डिवाइड नहीं होती, एक ही बंदे के पास पावर होती है और एक्सेसिव पावर जो है सेंटर के पास होती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल प्रोविजनल ऑटोनॉमी में रहती है उसकी वजह से. हाँ, गुड पॉइंट. यू नो देखिए, अगेन दिस इज सम सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप बहुत तफसील में बहस कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सो मैं एक सिंपल पॉइंट ही करूंगा. और पॉइंट ये है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपका एग्जीक्यूटिव एक बंदा लीड करे, टेक्निकली स्पीकिंग, राइट? ही इज द गाय हु इज बीन इलेक्टेड बाय द एंटायर कंट्री. A president can by definition be representative of just one group. He cannot be, let's say, a Pathan and a Balochi and a Sindhi at the same time, right? He has to be just one of the many ethnic groups that Pakistan has, right? And so automatically power sharing in a presidential system is not possible. Mumkin hi nahi hai. By definition, mumkin nahi hai, right? Again, something one can debate. By contrast, parliamentary systems में बड़ा आसान है. क्यों आसान है जी? There are multiple groups that are represented in the governing coalition led by PM Imran Khan. So इस वक्त जो मौजूदा coalition है, उसके अंदर MQM भी है. आपका लॉ मिनिस्टर जो है उनका MQM से ताल्लुक है. इसी तरह उसमें GDA भी हैं, सिंध की कुछ पार्टीज भी हैं. हालांकि अगर आप देखें PTI की इंटीरियर सिंध में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, but Dr. Fahmida Mirza, who happens to be one of the federal ministers and a coalition partner of the existing government,
she's been elected, I believe, from Badin, which is in interior Sindh. So you can immediately see कि जो parliamentary form of government है that encourages the government of the day to form a broader coalition. क्योंकि इमरान खान साहब की सीटें enough नहीं थी पार्लियामेंट में, he was forced to go out and broaden the coalition. कि यार आप भी मेरे पार्टी गवर्निंग कोalition को ज्वाइन करें, आप भी मेरे को ज्वाइन करें, आप भी मेरे को ज्वाइन करें, मुझे जरूरत है हुकूमत बनाने के लिए, right? So parliamentary system encourages the formation of broader governing coalitions, बड़े coalitions. And जब बड़े coalitions बनते हैं तो automatically representation of other ethnic groups increase हो जाती है. और जब representation of ethnic groups increase हो जाती है तो chances of imposing high external costs minimize हो जाते हैं. Is that clear? Fairly simple, I believe, right? Any Yes, questions? It's clear, जी, sir. Okay. Again, remember how we are trying to apply the framework that we've discussed in part 1. इसी तरह अयूब खान साहब का जो presidential rule था, उन्होंने जो rule किया उसके बाद जो ethnic groups के demands थे वो आपके सामने हैं, historically speaking, so one does not need to go into that, and that remains a very contested period in our history precisely for this reason कि उसमें power sharing ना होने के बराबर थी. इसी तरह जो दूसरा point वो raise करते हैं in the article that was shared with you is with respect to group autonomy. What exactly is group autonomy? Does anyone understand what it means? Anyone who wants to give it a try? Sir, group खुद मुख्तार होंगे फिर अपने decision. मुझे समझ नहीं आई. Sir, decision making group पे लाई करेगी group autonomy उसके बाद. हाँ, बेसिक आइडिया ये है कि जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ माइनॉरिटीज हैं एक रियासत में, एक मुल्क में, आप उनको ऑटोनॉमी दें कि वो अपने से रिलेटेड फैसला साजी खुद कर सके, राइट? सो दैट्स द आइडिया ऑफ ग्रुप ऑटोनॉमी. बिकॉज जब आप एक माइनॉरिटी को या एक एथनिक ग्रुप को ऑटोनॉमी देते हैं कि इन 6 इश्यूज पे आप फैसला साजी खुद करें, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बाकी ग्रुप से जो मेजॉरिटी हैं उनसे ये पावर ले रहे हैं कि वो उनकी तकदीर से रिलेटेड उन 6 इश्यूज पे फैसला कर सकें, राइट? सो दिस इज अ वे, दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ रिड्यूसिंग एक्सटर्नल कॉस्ट, बिकॉज आपने मेजॉरिटी से पावर लेके उस ग्रुप को, उस माइनॉरिटी को दे दी बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी. और ऑटोनॉमी का मतलब है कि उनको इंसुलेट कर दिया कि इस स्फीयर में कोई मदाखलत नहीं होगी मेजॉरिटी की तरफ से. तो आपने उनको ऑटोनॉमी दे दी, आपने एक्सटर्नल कॉस्ट कम कर दी, राइट? सो here's the question, how can the constitutional design do that in the Pakistani context? What are the main dominant groups? हाँ, अब्दुल कासी. सर लाइक हम लोगों ने माइनॉरिटीज की बात की. फॉर एग्जांपल अब माइनॉरिटीज के रिलीजियस लॉज हैं, वो डेलीगेटेड अथॉरिटीज की बात हो रही है. आई गेस के अपने हिसाब से अथॉरिटीज को आप और ग्रुप्स को आप डेलीगेट कर दो कि आप अपने हिसाब से रूल्स बना ले, अपने हिसाब से आप लोग एक तरीकाकार बना ले. तो मेरा ये ख्याल है सर इसमें कि माइनॉरिटीज को जिस तरह की मेरे ख्याल से है भी, इसी तरह की माइनॉरिटीज को बता दे कि आप अपने रूल्स के हिसाब से अपने लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई भी रिलीजियस रूल्स हैं, आपके कोई भी इस तरह के मतलब एथनिकल रूल्स हैं, तो आप अपने लिए बना सकते हैं और अपने ऊपर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं वो. Okay, that's one way, but there's another way also. That does not guarantee autonomy, by the way. मैं आपको बताता हूँ क्यों. But anyone else wants to contribute to this before I move forward? Okay, I guess there's no one who wants to add on to this. Okay, so look, within the literature on group autonomy and constitutional design for divided societies, what you've got to understand is that group autonomy can be conferred by 2 ways, and it depends on what happens on ground, right? So for a geographically concentrated minority, what is a geographically concentrated minority? It's a very simple question. Like Balochistan. हाँ, कि एक माइनॉरिटी है, एक एथनिक ग्रुप है जो एक मखसूस इलाके में महदूद है, ठीक? जिस तरह बलोची हो गए,
इसी तरह एक आपका एथनिक ग्रुप है सिंधियों का, वो एक इलाके में महदूद हैं, and so on and so forth, Pathan hai, and so on and so forth, right? So the idea is that for such geographically concentrated minorities, बड़ा आसान है, आप उनको autonomy दे दें through a federal structure. Your constitution should have a federal structure, one, and through that federal structure, you should give them autonomy. ताकि वो अपने फैसले खुद कर सके, यानी कि in the Pakistani context, it means provincial autonomy. क्योंकि ये तमाम एथनिक ग्रुप्स एक मखसूस सूबे में मौजूद हैं, आपने इनको सिर्फ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गारंटी करनी है, एंड दैट्स इट. दैट इज व्हाट द लिटरेचर सेज, राइट? एज यू नो, हमने अपनी तारीख में इसको बड़ा कोशिश की, बड़ी मुश्किल से 18वीं में आई, और अब दोबारा आवाजें उठती हैं, ये बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा गलत हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट दिस रन्स अगेंस्ट द डोमिनेंट स्ट्रैंड of literature in constitutional design on how one should design for divided societies, right? एक इशू जो आपके पास आता है वो ये आता है कि जो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड माइनॉरिटीज हैं, जिस तरह आई थिंक अब्दुल कासी ने बात की अबाउट रिलीजियस ग्रुप्स, अब शिया जो हैं वो किसी एक मखसूस इलाके में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? उनके लिए ये वाला solution will not work, right? You need to combine other safeguards, maybe fundamental rights, an independent judiciary becomes important, and then of course you can pass laws giving legal sanction to their personal laws, to their customary law, कि जी ठीक है, आप अपने कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अपनी inheritance के laws बना लें, and so on and so forth, right? जो interesting चीज़ है वो ये कि इंडिया ने भी in the 1950s, I believe 1952 में पहले, फिर 1956 and then 60 and then maybe even in 66, multiple times इंडिया ने अपने स्टेट यानी कि अपने जो सूबे हैं उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया. हम खुशकिस्मत इस लिहाज से थे कि हमारे जो ग्रुप्स थे वो ऑलरेडी बटे हुए थे अलॉन्ग प्रोविंशियल लाइंस, और जो प्रोविंशियल लाइन थी या जो सूबों की जो ड्राइंग थी या जो लाइंस थी, बाउंड्रीज थी, वो कॉरेस्पॉन्ड करती थी टू द एथनिक ग्रुप्स. सिंध फॉर सिंधीज, एपी के फॉर पठान्स, डोमिनेंट ग्रुप वो पंजाब फॉर पंजाबीज, एंड बलोचिस्तान फॉर बलोचीज. आपको कोई लाइंस एज सच रीड्रॉ नहीं करनी थी, आपको सिर्फ ऑटोनॉमी देनी थी. इंडिया में ये नहीं था. इंडिया में रियासतें या स्टेट्स जो थी वो बड़ी थी, और इंडिया को उनको बाइफिकेट करना पड़ा, तोड़ना पड़ा along ethno-linguistic lines multiple times. As I said, it happened in the 50s and then in the 60s. So to give you an example, जो Bombay था, Bombay was split into two provinces. One was Maharashtra, the other was Gujarat, because दो मुख्तलिफ ज़बानें हैं, दो मुख्तलिफ ethnic groups हैं. जो famous Bombay province था, was split into two provinces. इसी तरह अगर आप इंडियन साइड पे पंजाब को देखें तो पंजाब was split into Punjab and Haryana. One for the Sikhs क्योंकि वो dominant ethnic group थे उधर, and the other province को split किया हरियाणा को for the Hindus क्योंकि वो उस इलाके में dominant group थे, right? So you know, it's not just that Pakistan faced such issues of succession, India में भी ये issues हुए, और India ने इस चीज को tackle किया by redrawing their boundaries. हमें तो redraw करने की as such जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हमें तो autonomy भी नहीं थी, right? So it's unfortunate that historically speaking we did not fulfill those two principles. But again, the purpose of this talk is not really going into those details कि हमने सही किया गलत किया. It is to give you an analytical framework through which you can think for yourself and come up with your own conclusions कि सही हुआ गलत हुआ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. It's just my purpose here is to only help you think about how to approach the Constitution. I had a few other slides, but I'm afraid if I just spend some time talking about that, we will just end up spending a lot of time on that. So maybe I should just stop here with Madam Faika's permission and then open the floor for questions. As you wish. Thank you very much, Bakhtawar. I think it was a wonderful discussion as well as really stimulating points for the students to think and analyze and apply this theory on our situation as well. I would like to open the floor for questions. If you have any questions, the students would like to ask any questions relevant to our discussion of the day.
And I would like to remind you of my question, if you can answer that. If जी you can आप अगर काइंडली रिपीट कर दें कि मैं उस पे किस चीज पे स्टूडेंट्स को कर सकता हूँ हेल्प। मैं बिल्कुल कुछ याद है बट आई हाँ बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल my question actually, and rather I'm putting voice to my students' concern as well. जब हम लोगों के when we are going through of course आपको मैंने बताया था कि मैं पढ़ा रही हूँ constitutional development in Pakistan, and when we are going through the history and the political part of it and the political impact of it, we always see, and there is a frustration that I find that the students keep on coming up with this question, that the constitution is the supreme law. Of course, it is there to protect the minorities. If you have got them through, and the whole theory about it and applying it, the framework. My question is कि amendments आती हैं constitution में. मैंने जिस point पे आपसे ये सवाल पूछा था, आपने सिर्फ mention किया था कि constitutional amendments आती हैं, and then there is a supreme power that is going to bring in that amendments. सिर्फ एक majority की power से नहीं होती है. I wanted to ask you your opinion on this. What is your say on this? कि हमने अपने मैंने तो खैर प्रीवियसली भी देखा है, आप लोग भी देख रहे हैं, ये बच्चे भी देख रहे हैं कि अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में की जाती हैं, और वो जो कंसिडर किया जाता है कि वो जो पावर है, दैट इज नॉट जस्ट द मेजॉरिटी पावर, दैट इज द सुप्रीम मेजॉरिटी. Even that too is at times shows that the amendments were made only to attend to or to cater to one particular person or one particular party, to attend to their concerns and their will. So, what role and how does the Constitution then safeguard, for the very reason that the Constitution is there, that how does it safeguard? It's more of, I would say, I would like to know your opinion on this. How do you assess that? How do you analyze it? Okay, I think very interesting question. Actually, मुझे भी ये सवाल multiple times when I was teaching at LUMS students ने किए. My response is twofold. One, you have to, I think, distinguish periods when amendments were introduced through or by military dictators unilaterally. वो तो एक completely different set of circumstances है. और फिर of course बाद में उसको हमारी elected assemblies ने ratify भी किया, उसको legal cover भी दिया. उसकी क्या वजूहात थे, उसको हम I think side bracket कर सकते हैं for the moment, because then we'll go off in a different tangent. वो तो of course is wrong. Supreme Court को भी उसको legal cover देना गलत था in all those cases. And you know, even in Zafar Ali Shah case उन्होंने कहा कि जी 3 साल के लिए मुशर्रफ साहब constitution में unilaterally amendment कर सकते हैं. अब ये पूरी जो हमने discussion की है, जो पूरी हमने theory develop की है of how to look at the constitution, ये उसकी नफी करता है, ये idea and ये doctrine जो Supreme Court ने lay down किया. So one can be very critical of the Supreme Court, and I'm very critical of the court, you know, and the court's previous role in giving legal cover to military dictators, precisely because of this reason. They do not appear to understand, you know, the role that a constitution plays, and by giving a unilateral power to a dictator to make changes to the constitution is just unfortunate. And coming from the Supreme Court, it's perhaps even more depressing. So I will keep that aside. दूसरा issue ये है कि जी constitutional amendments कहीं-कहीं नजर आती हैं for political purpose or for personal benefit. I remember, I think कि भुट्टो के दौर में this was very evident, especially जो पहले कुछ amendments आई थी, especially with regards to the changes in the process of appointing judges. That of course is not good. But you have to understand two things. One, and actually जो मेरी पिछली slides थी वो bicameralism के ऊपर ही थी कि कैसे bicameral structure safeguard करता है. मेरी नजर में अगर तो continuity हो in the political process, तो constitutional amendments करना इतना आसान नहीं है. उसकी reason ये है कि you need a super majority not just in the National Assembly but also in the Senate, right? Now, through a general election, and this is very important, actually, let me just quickly go back to the slide. Through a general election, a party actually only ends up winning seats in the National Assembly. But in order to win, pass a constitutional amendment, they also need to win at the Senate.
Now the Senate has a staggered term, which is very important, right? And I showed it over here. So क्योंकि Senate की staggered term है, इसका मतलब basically ये है कि Senate term is 6 years with a staggered term, elections held on 50% seats every 3 years. So even if I win a general election in 2018, even if, for instance, the Pakistan Tehreek-e-Insaf has won an election with a majority, let's say, in 2018, it does not have a majority in the Senate. So it cannot bulldoze or pass a constitutional amendment simply because it does not have a majority there as yet, right? वो मौका उसके पास कब आएगा? 3 साल बाद. और 3 साल बाद आएगा जब 50% of the seats of that Senate vacant होंगी. So 2 साल या 3 साल उसकी हुकूमत के गुजर जाएंगे without it having the majority in the Senate to be able to pass a constitutional amendment, right? और क्योंकि Senate, अच्छा उसके बाद अभी सिर्फ 50% सीट्स वेकेंट होंगी. नाउ अगली 50% वेकेंट होंगी अगले 3 साल बाद. अगले 3 साल बाद का मतलब है a year after the next general election. So PTI would have to win the next general election also in order to have a super majority in both the National Assembly and the Senate. And you can see this तो हाँ 2012 मार्च में पीपल्स पार्टी की majority in the Senate. But then look what's happening. 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग wins an overwhelming majority, 2/3 majority के साथ वो नेशनल असेंबली में आते हैं 2013 में. But 2015 में majority किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की. So even if they have let's suppose an overwhelming majority in the National Assembly, they still don't have a majority in the Senate. Why? Because the Senate has a staggered term. वो term पिछले election से चली आ रही है जब People's Party हुकूमत में थी. So Muslim League is being forced to develop or to broaden the governing coalition in order to pass its agenda or in order to pass a constitutional amendment. इसी तरह अब you will notice that by the time Muslim League Noon gets a majority in the Senate, which is in 2018, उसके 2 महीने बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है. Now जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो majority 2021 तक किसके पास है? मुस्लिम लीग नून के पास है. And Tehreek Insaf is now forced to sit down with Muslim League Noon at least up until 2021. And this is why the Senate elections have become important. So the point that I'm trying to make is that passing a constitutional amendment is not that easy. The reason why you see a lot of those cases of abuse in the first few years, especially after the Bhutto years, is because वो Senate पहली Senate थी under the 1973 Constitution, right? उसमें तो staggered term थी नहीं क्योंकि simultaneously elections National Assembly पे भी हुए, Senate पे भी हुए. अब अगर democratic continuity हो, as you can see, तो ये result होगा कि आप National Assembly में तो जीत गए लेकिन Senate में seats जीतने के लिए you still need to wait, right? So my conjecture on this, again, this is pure conjecture, it will become as and when the democratic process continues, it will become increasingly difficult for parties to pass constitutional amendments. Having said that, one also has to take stock of Article 63A, which is a new addition in our constitution, comparatively speaking, to basically कहता है कि for constitutional amendments you have to follow the dictation given to you by the party head. So that might counteract against the protections being built in through bicameralism. Again, this is something that one will have to see. And on the last point, again, something that I do tell the students also, वो ये कि जो constitutional protections होती हैं उनको abuse करना इतना आसान नहीं होता. Now I'll give you an example. जो पैनामा का केस था, जब नवाज शरीफ के साथ ये हो रहा था, तो नवाज शरीफ could have passed a law जिसके तहत वो लेट से कोर्ट से वो jurisdiction ले लेते या अपने आप को कोई immunity दे देते. And I remember that was an option that was discussed at one point, but वो उन्होंने नहीं किया, even though he had the majority to do that in both houses, simply for the reason कि apart from the constitutional checks and balances, there is a political check and balance also. कि voters उसको कैसे perceive करेंगे कि आपने एक law pass किया है for your own personal benefit. So I think things have changed in the last few decades perhaps, and they will continue to improve going into the future.
Thank you very much, Bakhtawar. Thank you so very much. Just last request, अगर कोई students का सवाल है तो kindly please proceed on so we can end the lecture because Bakhtawar has already given a lot of time to us. Or what you can, I suggest you, if you come across any other question आपने पूछना हो तो kindly you can send it to me and I'll email and I'll request if Bakhtawar could answer it or respond to it. Yeah, sure. However, I'm so indebted. You gave us so much time. Not at all. My pleasure. I hope it was helpful for the students. Would have loved to come in person, but unfortunately, because of the prevailing circumstances, that is just not possible. Sir, I have one question. जी नबील. Sir, we see in last month, sir, जब ये हुआ था FATF के बिल पास हो रहा था, तो नेशनल असेंबली से बिल पास हो गया था, लेकिन सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी थी, वो पास नहीं हुआ. तो सर उन्होंने बोथ हाउसेस का वो जो को कंबाइन जो इजलास बुला के पास तो कर लिया था फिर भी. तो इसमें आपका सवाल क्या एग्जैक्टली? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर चांस तो होता है सर जो गवर्नमेंट में हो, अगर वो उनकी सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी उन्होंने किसी तरीके से कर तो लिया था. वो मैं बताता हूँ वो कैसे हुआ था. वो ऐसे हुआ था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 55 में कोरम की रिक्वायरमेंट है. ये भी अगेन another thing that I wanted to discuss, this is on the slides but I couldn't because we had limited time. कोरम की रिक्वायरमेंट ये कहती है कि जो वोटिंग है इन द नेशनल असेंबली इन द सेनेट, उसमें वोटिंग होगी आई थिंक 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए. सो लेट्स से अगर 100 लोगों की 96 लोगों की सेनेट है, तो उसकी जो 1/4 है दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम. 25% बहुत कम है, राइट? उस 25% के मेजॉरिटी ने फैसला करना है. अब आप खुद ही उसका 25% का मजीद आधा कर दें तो कितने कम लोग बचेंगे. हुआ ये था सेनेट में कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी थे, इनके तमाम सेनेटर्स एज फार एज आई रिमेंबर नहीं गए थे, राइट? क्योंकि वो नहीं थे तो कोरम, और पीटीआई के सारे सेनेटर्स मौजूद थे और उनके कोalition पार्टनर्स के. सो दिस इज हाउ दे मैनेज्ड टू गेट इट पास्ड थ्रू द सेनेट. अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अपने तमाम सेनेटर्स को ले आती है तो फिर ये पास नहीं होना था. सो अगर आपको याद हो कि उन दिनों अखबारों में ये भी आया था कि वो पार्टी के लीडर्स बड़े नाराज हैं कि हमारे तमाम सेनेटर्स क्यों उस दिन हाजिर नहीं हुए, क्यों पेश नहीं हुए. तो यू नो ये भी रीजंस होती हैं जिस वजह से चीजें पास हो जाती हैं. दिस इज आल्सो अनदर वीकनेस, अगेन अ फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट एंड डिसीजन कॉस्ट. Thank you very much, Bakhtawar. Thank you so very much. And on behalf of UMP as well, I would like to especially say thank you to you for your time. And we always look forward to have lectures from you. And inshallah, we will have it soon in person as well once the university is open. And on behalf of my students as well, I would like to convey you our gratitude. Thank you very much for giving us your time and such a wonderful analysis and application of this theory as well. Thank you so much. Thank you, Ji. Thank you. Grateful. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Ji. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, all of my students as well. Thank you for being here. And a learning experience for all of you. And what I really enjoy about Bakhtawar's lecture is that he's very interactive, and then he discuss and bring together things and connect them in such a manner जो समझने में बहुत आसान होती है, and then you retain it. You try to understand कि what is the philosophy behind it, what is the theory that is applied. So thank you all. Thank you very much. I'm ending the session for today. And thank you for your contribution as well. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, ma'am. मैम एंड कर दें. जी, अल्लाह हाफिज. जी, बिल्कुल. अल्लाह हाफिज मैम.